हाईएस्ट सिविलियन रैंकिंग किसके पास है? हाईएस्ट सिविलियन रैंकिंग किसके पास है? ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन रैंकिंग किसके पास है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन रैंकिंग किसके पास है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पास क्या है? तो हाईएस्ट सिविलियन रैंकिंग है। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पास क्या है? हाईएस्ट सिविलियन रैंकिंग है। इन द फॉलोइंग टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अबव द CJI? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो आप एक बार टेबल देख लेना। हाईएस्ट क्या पूछ रहा है? तो गवर्नर जो है, डिप्टी, फॉर्मर प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा के आगे ही आते हैं। टॉप सिविलियन कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट CJI, यूनियन कैबिनेट, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री। लोकसभा, द इलेक्टोरल रोल आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The electoral roll are prepared under the direction and control of the election of India. Candidate of the Lok Sabha loses the election अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिला तो। मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू सीक इलेक्शन ऑफ द लोकसभा क्या है? 25 साल। फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी filed by any citizen whose name appears in the electoral list. '84 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2026 के सेंसस में आया है। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट, ये गलत है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आपको पैसा लेना है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपको पैसा विड्रॉ करना है कंसोलिडेटेड फंड से, तो आपको पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए। All the disbursement made from the public account also needs authorization from Parliament of India, ये गलत है, बस 2 सही है। All the disbursement made from public account needs authorization of India, ये गलत है। Annual financial statement, withdrawal of fund from the Consolidate Fund of India, passing the appropriation bill, provision of the supplementary and vote of account, and introducing the financial bill in the parliament. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अफेक्टिंग द टैक्सेशन ऑफ द स्टेट जो कि इंटरेस्टेड है, ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड मनी बिल, ये 4 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड राज्यसभा कैन स्टॉप अ फाइनेंशियल बिल। आंसर जो है वो ओरल एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है उसको पूछा जाता है। द स्टेज ऑफ द नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे? प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंशियल बिल। प्रायर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पार्लियामेंट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड
altering the boundaries of the state and the money bill. State question क्या है? Oral and supplementary. Oral and supplementary. Office under the SC and ST 1989 क्या है? All the above. Which of the following section of the Schedule Caste 1989 provided the application of the Indian Penal Code Section 6? SC and ST Prevention Act कहाँ पे बॉर्ड हुआ है? एंटीसिपेटरी बिल में. SC/ST prevention क्या है? To make the take measures of a people. SC/ST prevention act में क्या होता है? Act done in the exercise of the private defense and act such as slight harm could not be subject to the complaint. A court of session specified as the court to try the offences under SC/ST कहाँ पे है? Speedy trial. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2005 में आता है. कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू टेक द फूड टेस्टिंग एंड अगर डेथ हो गया, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, यूयर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंज्यूमर फोरम. प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज held are benami liable for confiscation of the government. ये सही है. Right to information is generally has been responsible in sense of the bureaucracy and it has still a mile to go. दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक ही सही है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट वाला आता है. The power to enlarge the jurisdiction of Supreme Court with respect to the matter in the Union list of the Parliament rests in the hand of the Parliament. By whom jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged? Parliament by making law. Resolution नहीं, by making law. The advisory power of the Supreme Court implies that it advises to the President on issues or facts which are of public importance. ये advice करता है President को वैसा issues या वैसा fact जो कि public के लिए important हो. Supreme Court tenders advice to the President on matter only if he seeks some advice. Who has the right of constitution to seek opinion from the Supreme Court? The President. Under which of the following constitution, Indian constitution safeguards the fundamental right 32. To become the judge of the Supreme Court, a person must be advocate in for 10 years. प्रेसिडेंट के पास राइट है ट्रांसफ़र करने का केस एनीवेयर इन इंडिया. और कभी कभी देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट नहीं है, ये राइट प्रेसिडेंट के पास है टू ट्रांसफ़र द केस एनीवेयर इन इंडिया. तो सिंपल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ हैविंग द राइट टू ट्रांसफ़र द केस एनीवेयर इन इंडिया. सो इट्स प्रेसिडेंट. विच केसेस कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? तो इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. TD साइड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट होल्ड इस मीटिंग इन दिल्ली और कहीं और भी कर सकते हैं बाय द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, बाय द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट? इट कैन चेंज द जज.
PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ PIL US में। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? PIP। The appointing is the judge of the Supreme Court and President has the right to consult the CJI and the salaries of judge कहाँ पे? Consolidate Fund of India में। A dispute between Government of India of one or more state and the dispute between the government and the UT. The full bench of the Supreme Court hears any reference made under the advisory jurisdiction and the opinion of Supreme Court on reference of the advisory jurisdiction ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। Supreme Court tenders the precedent if he seeks some advice। 32, 226, 227। Under which of the following article Indian Constitution government reserves the bill to 200? Government has to prove majority in the section of the LA to terminate the CM, reserve the bill for the president, and sell the bill for the LA. President or a governor cannot be sued in the court, and the president can be impeached under the governor and for unconstitutional act. The president can be sued in a court of law for any act, and the president can be impeached and governor can be dismissed for unconstitutional act. हाँ, गवर्नमेंट अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करे तो उसको डिसमिस करा जा सकता है। सीएम का करेक्ट क्या है? ही इज़ नॉर्मली सिलेक्टेड बाय द, ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नॉर्मली क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। 164 Money bill are proposed in LA. No bill can be introduced in the LA except on recommendation of the governor. The governor has to exercise his function on the advice of the CM. एलसी का क्या है? टेन्योर 6 साल नहीं, परमानेंट है। ये परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। देखो 2-3 दोनों ही जाएगा। 2-3 कहाँ पे? 2-3 जहाँ पे बन गया बस वो बन गया। 1/6 बाय द लोकल बॉडीज याद नहीं है, कोई बात नहीं। टेन्योर मेंबर का है तो चलो 2-3 और 8 कहाँ पे है? बस यहाँ पे आंसर आ गया। The LA of each state shall consist of not more than 450 members chosen by the direct election from the territorial constituency of the state। ऐसा नहीं पढ़ा है। और LA 25 years सही है। ये
3 बस नहीं, वो सीएम पार्टिसिपेट इन नेशनल डेवलपमेंट मीटिंग में सीएम क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? स्टेट एलए जो है, देखो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इतना तो आपको पता होगा, एलए पल्ले नहीं पार्टिसिपेट करता है। अब याद आएगा कि कहा गया था एलए एंड पल्ले, तो ऐसे आप याद रखना। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1 मंथ के अंदर होना चाहिए, रेटिफिकेशन 1 मंथ। The term of state LA can be extended by the parliament, ठीक है। During emergency, term of state LA can be extended by the parliament. On the advice of president rule, कौन इम्पोज करता है? गवर्नर। Which of the following of the Indian Constitution has never been implemented? 360. Financial emergency has been declared in India कितनी बार? Never. How many types of emergencies has been there under the Indian Constitution? 3. During national emergency, the term of the House of People can be extended till emergency and last by 1 year at a time. Present rule can be imposed for the 3 years. The president can declare national emergency if there is threat of external aggression and armed rebellion. प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ द एलए, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये नहीं है प्रेसिडेंट रूल में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्यों रिमूव करेंगे? इतना भी ज़्यादा वो नहीं है कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने लग गए। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, along this proclamation state LA can be dissolved। 356 में LA क्यों डिसॉल्व होगा? LA डिसॉल्व नहीं होता है। फेलियर ऑफ द कंस्टिट्यूशन मशीनरी, अ प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ वाली भी चीज़ है। और एक और चीज़ आप पूछ रहे हो कि अलॉन्ग दिस प्रोक्लेमेशन स्टेट LA कैन बी डिसॉल्व, ये गलत है। LA डिसॉल्व नहीं होता है। A proclamation of financial emergency ceased to operate within 2 months, ये भी 2 month है। And if the proclamation of the financial emergency is in operation, it is competent for the president to issue high court and supreme court के जज का सैलरी भी कम होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन अदर इलेक्शन कमीशन के पास इक्वल पावर है, सेम जज का सैलरी है। इलेक्शन कमीशन में क्या होता है? ये 3 चीज़ नहीं होगा। फंक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कमराज प्लान क्या है? मेकिंग INC वाइब्रेंट। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव क्या है?
BR अम्बेडकर का पीजेंट पार्टी तो नहीं था। Which of the following were not a part of the Union Front which was in power in 966 to 967? ये तीनों। Which of the following are matter of the constitutional amendment possible with the ratification of legislative of less than half of the member, election of the president, representation of state in the parliament and 7th schedule and abolition of LC? ऐसे भी LC का abolition इसमें नहीं आता है, तो LC का abolition किस चीज़ में आता है ये आप बताना। पंचायती राज स्टेट लिस्ट का इलेक्शन जो है हर 5 साल में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथराइजेस टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन तो स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव। डिसीजन टू कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन कौन लेता है तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन देखो अब वो अलग बात है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर डिसीजन लिया जाएगा कि पंचायत का इलेक्शन कमिट करना है तो कंडक्ट कराना है तो फिर वो कौन लेते हैं तो वो स्टेट के गवर्नमेंट लेते हैं कि चलो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बात करते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन? गवर्नर। Fundamental duties क्या? Legislative has been provided to enforce its duties. The legislative procedure has been provided to enforce its duties, ठीक है, and they are correlative to the fundamental duties. No, don't do that. दोनों गलत है। To the legal duties they are not correlative and the legal procedure has been provided to enforce its duties, ये भी गलत है। आप छोड़ो मेरा हाथ, तो ऐसे कोई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज नॉट द फीचर क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? Mechanisms for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गुड गवर्नेंस का कहाँ पे तो सिटीजन सेंट्रिक है। प्रिंसिपल ऑफ मिथ एंड प्रूफ ऑफ हर्बर्ट साइमन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वेयर हैज, ठीक है, एंड मिथ एंड प्रूफ ऑफ साइमन ने करा है। नॉट बिन सेट एज अ टाइट मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म अम्बेडकर। Parliamentary form of government के member of cabinet are member of the parliament and they hold for the confidence and the cabinet is headed by the head of the state. पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ पे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट वेस्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट किसके हाथ में? पीपल के हाथ में। यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो कार्डियल फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम क्या? डेमोक्रेटिक, पार्लियामेंट एंड ये क्या है? ये यूनिफाइड फीचर नहीं है। इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी है एंड ये सोवरीन है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, ये देख लेना।
Constitution introduces a federal form of government and strong unitary biasness है. Constitutional government is one which place effective restrictions on the authority of a state in the interest of the individual liberty. यूनिटरी में क्या क्या फीचर्स है ये आप बताना. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड पार्लियामेंट हैज़ कंबाइंड विद द रिपब्लिशियन. दोनों सही है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म वॉज टू वेव आउट द नेशन इन द डाइवर्स पार्ट. ठीक है. एंड द एकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्स कहाँ पे है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, तो ये ना स्ट्रॉन्गर है. Women, Dalit, poor and minorities are biggest stakeholder of the democracy. And the democracy has emerged as a career for the desire of the self-respect. Power to include the admit any state into the union is vested in the hand of the parliament. नेचुरलाइजेशन कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ द सिटीजनशिप. ऐसा नहीं है, किसी भी कोई भी डिप्राइव हो सकता है. 3 भी अगर आप पता कर लोगे तो बाकी आप कर ले जाओगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन 16(1) एंड 16(2). ओबीसी का रिजर्वेशन कहाँ पे 15(4) एंड 16(4). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. An accused cannot be compelled with a witness against himself. 23. But baby, and he's just 4. Fundamental duties care to preserve the rich heritage of the culture and to develop the scientific temper and to strive toward the excellence. ठीक है. President is elected in indirect election. The member of board election of the president के elected member of the लोक सभा and विधान सभा. Elected member of the लोक सभा and विधान सभा. प्रेसिडेंट को क्या सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ, ये गलत है. 35 ईयर ऑफ एज. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं मेंबर ऑफ लोकसभा. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ किसके हाथ में है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. The Prime Minister is appointed by the President. The Prime Minister is appointed by the President, and the Prime Minister is the head of the Council of Ministers. And the Prime Minister at the time of the appointment need not be the member of the House. Discretionary power के appointment of Council of Minister, to return a bill with the objection, to return a bill with the objection, to detain a bill, to pardon, to summon a bill, and appointment of judges कोई discretionary power नहीं. तो 7 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. रिटर्न अ बिल विथ ऑब्जेक्शन टू डिस्क्रिशनरी पावर है. तो कुछ भी आपको पता होगा तो आप कर लोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन,
नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसका अलग होता है, ठीक है। ये आर्टिकल के हिसाब से सब कुछ अलग होता है, ठीक है। तो पहला वाला कंफ्यूज मत हो जाना। वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड चेयरमैन ऑफ सीएम ऑफ यूटी, ये सब तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ये आप एक बार प्लीज देख लेना। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे होता है? नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। दोनों सही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये लोकसभा में ही होता है। लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के कंट्रोल में है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के कंट्रोल में कौन है? तो लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं। राज्यसभा के मेंबर 250, मिनिमम एज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? 30 ईयर्स। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। ये याद रखना, राज्यसभा जो है डिमांड फॉर ग्रांट में वोट नहीं कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है। Joint session of the Parliament, Speaker of the Lok Sabha. A bill may be introduced in which house? Either house of the Parliament. Issue Consolidate Fund of India, Parliament. पेबल और लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स वगैरह। वोट एंड अकाउंट क्या? व्हेन रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड विद टाइम। ठीक है, जब रेगुलर बजट जब टाइम पे नहीं पास होता है। वोट एंड अकाउंट क्या होता है? अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग बाय द बजट। फाइनेंशियल बिल इज प्रेजेंटेड बाय द एलसी। यूनियन बजट कॉलिंग अटेंशन मोशन। ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? सब लोग हैं।
The Indian Parliament cannot legislate on subject of the state law. The Parliament direct is to do so, ये गलत है. And there is a national emergency and the Rajya Sabha passes a resolution जो कि national interest में है. And also there is a national emergency. Indian Parliament cannot legislate on state list unless, अगर यहाँ पे national interest की बात हो या तो national emergency हो. प्रेसिडेंट डायरेक्टेड टू डू सो, ऐसा कुछ नहीं होता है. बस दो चीज़ें. इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. ठीक है, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो या तो नेशनल इमरजेंसी हो. जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कौन करता है? जहाँ पे दोनों हाउस का डिफरेंट ओपिनियन होता है. जॉइंट सेशन 108 में 1961 में पहला जॉइंट सेशन हुआ था. और एक देख लेना ये वाला, डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा किस में होता है? तो ऑर्डिनरी बिल में होता है. अ प्राइवेट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर हु इज बाय अ मेंबर हु इज इलेक्टेड बट नॉट नॉमिनेटेड, नहीं, हु इज नॉट अ मिनिस्टर. प्राइवेट मेंबर बिल बहुत बार पास हुआ है, तो दोनों गलत है. लैप्सिंग ऑफ द बिल आप कर लेना. लैप्स